Delhi is set to add 2,800 new electric buses on its roads. Once these buses are deployed, Delhi's electric bus fleet is expected to cross 5,000 buses, making it one of the largest electric bus fleets in the country. ये पुश सेंटर की पीएम ई ड्राइव स्कीम का हिस्सा है, जिसके लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा सके। सीधी भाषा में कहें तो ईवीज को लेकर सरकार का मैसेज काफ़ी क्लियर है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि फ्यूचर पर लगाया गया एक लॉन्ग टर्म बेट है। लेकिन अगर फ्यूचर इलेक्ट्रिक है तो क्या आपकी नेक्स्ट कार भी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए? आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, माय नेम इज नुपुर एंड यू आर वाचिंग कंट्रोल Z ऑन न्यूज़ 9। Before we move ahead, please like this video and subscribe to our channel. For years, electric vehicles occupied a strange place in the minds of Indian buyers. Everybody agreed they were the future. Everybody agreed that they were better for the environment. But very few people were convinced they made financial sense. और ऑनेस्टली अगर आप 4-5 साल पहले किसी शोरूम में जाते तो शायद आप भी वही सोचते। आप एक पेट्रोल कार देखते, फिर उसका इलेक्ट्रिक वर्जन देखते और दोनों के बीच का प्राइस डिफरेंस देखकर सीधा सवाल पूछते, फ्यूचर तो ठीक है लेकिन इतना एक्सपेंसिव क्यों? बैटरी लाइफ का डर, चार्जिंग स्टेशंस का टेंशन, रीसेल वैल्यू का कंफ्यूजन और फिर वो सवाल जो शायद हर इंडियन बायर के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है, बैटरी खराब हो गई तो? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी की असली कॉस्ट शोरूम में डिसाइड नहीं होती। आस्क एनी कार ओनर, आपकी कार कितनी महंगी है ये उस दिन डिसाइड नहीं होती जिस दिन आप उसे खरीदते हैं। ये अगले 5 या 10 सालों में डिसाइड होती है, पेट्रोल पंप्स पर, सर्विस सेंटर में, इंश्योरेंस रिन्यूअल के वक्त और हर उस ट्रांजैक्शन में जो साइलेंटली आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। Which is exactly why the EV debate has changed today. Because while petrol cars often look cheaper on day 1, EVs start changing the economics from day 2. So, should you actually buy an EV in India today? Not as an environment decision, but more like a financial decision. Let's try to figure it out. India's EV revolution is no longer a future story. We already know that it's happening. In 2025 alone, India sold around 22.7 lakh electric vehicles, the highest annual EV sales ever recorded in the country. EV registrations grew by more than 16% compared to the previous year, and EVs now account for roughly 8% of all the new vehicle registrations. और मार्केट की ट्रैजेक्टरी देखें तो स्लो डाउन के कोई साइंस भी नहीं दिखते। India's EV market, valued at around $3.7 billion in 2025, is projected to cross a whopping $190 billion by 2034. In other words, EVs are no longer a niche category. They are slowly becoming a mainstream part of India's automobile market. और अगर आप अगले कुछ सालों में कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो शायद इस शिफ्ट को समझना पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। So let's start with the question everybody asks first. Why do EVs still look so expensive? चलिए शोरूम से ही शुरू करते हैं। आज अगर आप टाटा नेक्सॉन EV देखने जाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 12.49 लाख रुपीस के आसपास है। उसी मॉडल का पेट्रोल वर्जन रफली 8 लाख रुपीस से शुरू हो जाता है। ऑन पेपर दैट्स अ गैप ऑफ नियरली 4.5 लाख रुपीस। और वहीं पर बहुत सारे बायर्स डिसीजन ले लेते हैं, ईवी अच्छी है लेकिन अभी नहीं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां कैलकुलेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज द मोमेंट यू ड्राइव द पेट्रोल कार आउट ऑफ द शोरूम द मीटर स्टार्ट्स रनिंग एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट फ्यूल। आज 2,000 रुपए का टैंक भरवाया, नेक्स्ट वीक फिर भरवाया, उसके अगले हफ्ते फिर। Individually, I don't know for how many people does these transactions look dramatic, but over 5 years that amount becomes surprisingly huge. Let's do some simple math. Petrol prices in India are hovering around 100 to 110 rupees per liter in many cities. A typical compact SUV gives you roughly 15 kilometers per liter. That means every kilometer you drive costs somewhere between 6.5 to 7.5 rupees in fuel alone. And remember, ये सिर्फ fuel cost है. EMI, insurance और maintenance is separate expense altogether. Now compare that with EV. Most modern EVs consume roughly 15 to 20 units of electricity for every 100 kilometers traveled. और अगर आप घर पर चार्ज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी 8 to 10 रुपीस पर यूनिट है तो रनिंग कॉस्ट रफली 1.5 to 2 रुपीस पर किलोमीटर के आसपास आती है। लेकिन हर चार्जिंग घर पर भी नहीं होती। पब्लिक फास्ट चार्जर्स जनरली कॉस्ट मोर, ऑफन अराउंड 15 to 25 रुपीस पर यूनिट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर एंड लोकेशन।
उस सिचुएशन में ईवी की रनिंग कॉस्ट रफली 3 to 5 रुपीज पर किलोमीटर तक पहुंच सकती है. इवन देन, इन मोस्ट केसेस इट रिमेन्स चीपर देन अ कंपेरेबल पेट्रोल व्हीकल. Now let's assume you drive say 12,000 kilometers every year. For a petrol vehicle, that's roughly 80 to 90,000 worth of fuel annually. For an EV charged mostly at home, the same distance may cost around 20 to 25,000 rupees. In other words, every year you're potentially saving 60,000 rupees or more. और 5 साल में roughly 3 lakh rupees. Now let's talk about maintenance. EVs have no engine oil, no spark plugs, no clutch, no exhaust system और overall moving parts भी काफ़ी कम होते हैं, which means fewer things that can wear out. Take Hyundai's own service schedule for an example. Over a 10-year ownership period, the Creta Petrol accumulates service costs of more than 62,000 rupees. The electric version of Creta, on the other hand, comes in at roughly 33,000 rupees. और याद रखिए ये कंपनी के ऑफिशियल सर्विस एस्टिमेट्स हैं. रियल लाइफ में पेट्रोल कार्स ऑफन एंड अप कॉस्टिंग इवन मोर बिकॉज अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स इवेंचुअली क्रीप इन. और फिर आता है तीसरा फैक्टर जिसके बारे में बहुत सारे बायर्स प्रॉपर्ली अवेयर ही नहीं होते, द गवर्नमेंट. Because over the last few years, India has quietly made EVs significantly cheaper through a combination of incentives. और interestingly, ये benefit एक जगह से नहीं आता. It's layered. थोड़ा GST में, थोड़ा रजिस्ट्रेशन में, थोड़ा रोड टैक्स में, थोड़ा फाइनेंसिंग साइड पर. और जब सारे इंसेंटिव्स को एक साथ देखा जाता है तो इफेक्टिव ओनरशिप कॉस्ट और भी नीचे लगने लगती है. लेट्स स्टार्ट विद GST. Most petrol vehicles attract GST of around 28%, often with an additional cess depending on the category. Now EVs, just 5%. On top of that, several states have at different points offered direct EV incentives, registration waivers and road tax benefits. फिर आता है EV financing. Under Section 80 EEB, EV buyers can claim income tax deduction of up to 1.5 lakh rupees on interest paid towards EV loans. और फिर October 2024 में government launched PM E-Drive. Like I said, a 10,900 crore rupee program designed specifically to accelerate EV adoption across the country. The idea is simple. If India wants more people to switch to electric vehicles, then the upfront price gap needs to come down. And that's exactly what these policies are trying to do. Which brings us to the biggest fear in the mind of almost every EV buyer. The battery. Unlike a petrol car where the most expensive component is usually the engine, in an EV the battery is often the single most expensive part of the vehicle. In some cases, it can account for nearly 40% of the total cost. और इसीलिए जब लोग EV खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में ऑलमोस्ट इमीडिएटली एक सवाल आता है. What happens if the battery fails? क्या रिप्लेसमेंट का बिल लाखों में आएगा? क्या 5 साल बाद गाड़ी की वैल्यू खत्म हो जाएगी? और यही शायद EV अडॉप्शन के रास्ते की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल हर्डल है. लेकिन इंटरेस्टिंगली बैटरी टेक्नोलॉजी की रियलिटी और पब्लिक परसेप्शन में काफी डिफरेंस है. फॉर स्टार्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स themselves seem far more confident about battery life today than they were a few years ago. Take the Hyundai Creta Electric. It comes with an 8-year or 1.6 lakh kilometer battery warranty. टाटा, महिंद्रा, MG और बाकी मेजर मैन्युफैक्चरर्स भी सिमिलर वारंटीज ऑफर कर रहे हैं. ओवर द लास्ट डेकेड, लिथियम आयन बैटरी प्राइसेस हैव फॉलन ड्रामेटिकली. In fact, industry estimates suggest battery costs have now approached the psychologically important $100 per kilowatt hour mark. और बैटरी प्राइसेस जितनी नीचे जाती हैं, EV इकोनॉमिक्स उतनी ही अट्रैक्टिव हो जाती है. So what does all of this mean for an ordinary buyer? Battery failure is not impossible, लेकिन most experts don't expect it to be a major concern during the first ownership cycle. Now, a lot of people think India's EV revolution is being driven by expensive electric cars, but that's not what the numbers show. The biggest EV success story in India is happening on two wheels. In 2025 alone, India sold nearly 12.8 lakh electric two-wheelers. That accounted for more than half of all EV sales in the country. The people leading India's EV transition are not luxury car buyers. They are delivery riders, office commuters, college students, small business owners, people who ride every single day and feel the impact of fuel prices every single month. और अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है. Almost every major car manufacturer in India is now investing heavily in EVs. Now you may wonder, if the EV story in India is absolutely hunky-dory, why are petrol and diesel vehicles still dominating Indian roads?
The answer is simple: infrastructure. Because an EV can only be as convenient as the charging network supporting it. And this is where the EV experience can become very different depending on where you live. If you're driving in Bengaluru, Delhi, Mumbai or Hyderabad, finding a charger becomes easier every year. But move outside major urban centers and the experience can look very different. As of early 2026, India has crossed 29,000 public charging stations. Now, at first glance, that sounds impressive, especially when you realize that India had only around 5,000 public chargers in 2022. That's almost a six-fold increase in just 3 years. लेकिन context important है. In 2025, India had roughly 23 lakh registered EVs. That translates to around one public charger for every 235 EVs. Global benchmarks, depending on the country, are often closer to one charger for every 6 to 20 vehicles. और इसी वजह से range anxiety भी अभी completely disappear नहीं हुई है. For many buyers, the question is whether they'll find a charger on the go, and that uncertainty influences buying decisions. Under the PM E-Drive scheme, nearly 2,000 crore rupees has been earmarked specifically for charging infrastructure. The target is ambitious: more than 72,000 public charging stations across the country, not just inside cities but also on highways, commercial corridors and high-traffic transport routes. और अगर ये नंबर्स अचीव हो जाते हैं तो इंडिया का चार्जिंग नेटवर्क अगले कुछ सालों में ड्रामेटिकली डिफरेंट दिख सकता है. The plan includes more than 22,000 fast chargers for electric cars, around 1,800 chargers for electric buses, and tens of thousands more of two-wheelers and three-wheelers. Interestingly, the government's EV push is not limited to private cars. A major focus is public transport. Electric buses run longer distances, consume more fuel, and operate every day, which means the economics of switching to electricity becomes even more compelling. So yes, the infrastructure challenge is real. But unlike a few years ago, it is no longer being ignored. Which brings us to the question that matters most. After all the hype, after all the advertisements, after all the projections, should you actually buy an EV today? The honest answer is, it depends on how you use your vehicle. Because despite all the excitement around EVs, they are not the perfect answer for everyone. At least not yet. And that's important to acknowledge. Because too many EV discussions become ideological. Either EVs are portrayed as the future of everything or they are dismissed entirely. Reality is somewhere in the middle.